Appa Namaste everyone. Good evening. Welcome to another book study session on the book Compassionate Objectivity. Yeah. So it's 4:01. Let's begin with an invocation. एक prayer के साथ शुरुआत करते हैं. Just keep your spine straight. Take a deep breath. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to Lord Mahaguruji Meaning, to Grandmaster Choa, to all the great ones. We thank you for your blessings, your guidance, your help and protection. Thank you for blessing all of us with divine light, divine love and divine power. Thank you, Master, for your presence. To the healing angels, healing ministers, thank you for your presence. To my higher soul, my divine self, thank you for your presence. To the angels of technology, thank you for your presence. Gently open your eyes. To all the people who have joined in or you will watch later, Atma Namaste, thank you for your presence. So let's begin. We were on page number 31. We are on the virtue of accurate perception and correct expression. So let's begin. Make your own conclusions. Go beyond mass blind belief. So Master says that हर एक चीज के पीछे अपना खुद का conclusion बनाना जरूरी है. Many times it happens that we go by the conclusions of other people. मतलब उसने ऐसा बोला है मतलब ऐसा ही होगा. This person has said this, that means it might be like this. So sometimes we just come to a conclusions just because somebody has said so. मतलब किसी ने ऐसा कुछ बोला हुआ है इसीलिए we think कि okay ये ऐसा ही होगा. So that is the meaning of go beyond mass blind belief. Okay, what is glamour? It is a powerful thought form clouding your perception of reality. So glamour क्या होता है? Glamour is basically clouds of thoughts. Okay, जो बहुत सारे लोग मिलकर के बनाए हैं और वो जो clouds of thoughts है, it just comes in front of your brain or it gets absorbed by your chakras. और जब ये आपके ब्रेन को क्लाउड करता है या आपके चक्रस को क्लाउड करता है तो हमको दुनिया वैसी ही दिखाई देती है. It's like you wear a red color spectacle, you will be red color glass, you will be able to see everything red. So glamour is nothing but something that clouds our perception. Now these glamours बहुत तरीके के glamours होते हैं, बहुत सारे अलग-अलग तरीके के glamours होते हैं और ये मास्टर एक और शब्द यूज करते हैं in pranic psychotherapy book where he calls it, he also uses a word called as egregor. Have you heard about this before? Egregor. Okay, so I'll just put it on the chat box. It's called as egregors. Egregors are nothing but certain thought forms made by many people. You know, कोई society के thought forms, कोई community के thought forms, and everybody starts believing in that thought form. और हम लोग खुद भी उसी में जीने लगते हैं. So that is nothing but glamours or egregors. Yeah. We are on page number 31. Do not be impressed or fooled by esoteric or scientific speculations. Analyze them deeply and objectively. तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि हाँ अगर हम लोग को कोई बोला है कि you know what it is scientifically been proven या हम लोग को कोई बोल दिया कि you know what ये इस महान इंसान ने ऐसा लिखा है. Even if somebody has written it like that, we still have to make our own conclusions. We still have to think. We still have to use our own mental body also. किसी और का digest किया हुआ, but we still have to come to our own conclusion, even if a great person has said this or that. So that is what he's trying to say. Remember, anybody can say anything, anybody can write anything. Practice discernment or intelligent evaluation.
Remember yesterday we spoke about, not yesterday, in the last session, we spoke about 4 steps of intelligent evaluation. What are the 4 steps to practice intelligent evaluation? सबसे पहले understand, just understand the information को समझिए. Step 2, analyze. You have to analyze, think, connect the dots, try to analyze. Third, you experiment. And fourth, you conclude. Now imagine if you are always coming to a conclusion without experimenting, then the conclusion is not an intelligent evaluation. If you're coming to a conclusion without analyzing, बस किसी ने कुछ बोला और आप बोले हाँ ऐसे ही होगा, इसने बोला मतलब ऐसे ही होगा, but have you experimented it? Have you analyzed it yourself? So अगर हमारी आदत है बस हम ऐसे ही बिलीव कर लेते हैं, it makes our mental body or our mind वो थोड़ा lethargic हो जाता है. So would you like to know why this mainly happens? Have you already caught yourself at certain areas in your life where you don't practice intelligent evaluation? You just believe some people blindly, or you believe certain type of things blindly, or maybe also certain type of people blindly. Why do you think this happens? What could be the root cause of all these things? Any guesses? Let me see who can come to that. Why we don't like to analyze? हम लोग को पता है कि एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, हम लोग को ये भी पता है कि एनालाइज करना चाहिए, हम लोग को ये भी पता है कि we have to think about it deeply. But what stops us? What stops us from doing this? What stops us? Yes, Anupama, you're absolutely right. Basically, what stops us is nothing but, yes, many of you put in Divya, Sania, what stops us is nothing but mental laziness. Because कोई भी चीज के लिए डीप में जाने के लिए, डीप में समझने के लिए, we have to stretch our mental muscles. We have to think deeply. But हम लोग बोलते हैं कौन इतना सोचेगा, कौन इतना बुद्धि लगाएगा, तुमने बोला है ना ठीक ही होगा, doesn't matter, that's it, and you go ahead. We don't want to use our own mental body. We don't want to exercise our own mental body. Why we don't want to exercise our mental body? Because there is mental laziness. Mental laziness. Okay, another form of mental laziness is where we are okay to do physical labor because we don't have physical laziness, but we don't want to use mental labor. इसीलिए हम लोग अटके रहते हैं और हम लोग को मेंटल मसल्स बिल्कुल भी हमारे प्रैक्टिस नहीं होते हैं, एक्सरसाइज नहीं होते हैं, एंड दैट इज व्हाई डूइंग इंटेलिजेंट इवैल्यूएशन और अंडरस्टैंडिंग थिंग्स डीपली बिकम्स डिफिकल्ट. Yes. So next, objectiveness and non-falsehood gives you the ability to see people as they are. Okay. So if we are having glamours, if we are not thinking clearly, if we don't practice intelligent evaluation on ourselves, so obviously kya hoga? We won't be able to have accurate perception. We won't be able to perceive people as they are. हम लोग लोगों को किसी और के नजरिए से ही देखेंगे. जैसे somebody has said something about someone, when we meet that some person, तो उसने जो हमको उसके बारे में बोला है, हम उसको उसी नजरिए से देखेंगे. तो हमारा perception already clouded है, हमारा perception already blinded है, and we are not making our own conclusion. किसी और के conclusion के हिसाब से ही हम conclusion बना दिए कि ये इंसान ऐसा ही है. Okay. Here, so Master says, develop a mind that really thinks, not a mind that parrots. Question everything, but do it politely. मतलब हम लोग को question करना चाहिए. अगर कोई भी आपको कुछ information देता है, बहुत लोगों को खराब लगता है if they are being questioned, but it is our job, our duty, and it is practice of this virtue that we should question. We have our rights to question, but it can be done with politeness. It should not be done for the sake of humiliating someone or making somebody feel low, or it should not be just to test the teacher or test the instructor or test the person who is giving you the information. So you can question people, but it has to be done politely. Trials develop your ability and your discernment. Okay, I would like to take this question: how to differentiate between faith, trust with mental laziness. Now the thing is, faith and trust is good. Blind faith and blind trust is not good. So the difference between faith versus blind faith is different. It's totally different. The faith
which is not blinded, which is intelligently evaluated, which is tried, which is tested. We have seen like say for example, if you trust somebody or if you trust a person, your basis of trusting that person, is it based on somebody else's experiment, or is it based on the experiments that you have done with that person, based on the track record that you have had with that person? Then it is tried and tested trust. It is not blind trust. Blind trust is where you test, where you trust something without experimenting. That's it. Okay, so but sometimes we take advice from parents who have experiences. Yes, you can take advice, but still you have to come to your own conclusion. You can't say उसने मुझे बोला था इसलिए मैंने ये डिसीजन ले लिया, फिर बाद में जब वो डिसीजन गलत होगा आपको उसी इंसान पे गुस्सा आएगा. You can take advice from 3 people, 4 people, 5 people, 20 people, but you have to come to the conclusion कि कौन से advice को हमको follow करना है. Do you get that? Now, कौन से advice को हम follow करते हैं depends on our own discernment. Now, even if they are your parents, you can't say कि मेरे parents से मतलब हर चीज में सही होंगे. Yes, they are your parents. Maybe their skill, their track record on a particular subject is good. On a particular subject, it is not good. तो उसके लिए हो सकता है आप उनकी सलाह ना लें, because your parents are also not perfect. Like for example, if you need a business advice, okay, you're getting stuck in business, you're having some challenge in business, you need a business advice, and both your parents have always done jobs. दोनों बहुत successful है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा जॉब ही की है और आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड एडवाइस चाहिए. So whom will you go to? Can you go to your parents? Yes, but it will be better if they have experience of life, they have experience of doing good job maybe. But if you need a little bit of guidance when it comes to a business, then maybe you can get hold of someone or take guidance from someone, maybe your uncle who is good at business. So again, practice discernment कि कौन सी चीज के लिए आप एडवाइस ले रहे हैं. Right? Suppose you're taking advice for parenting from a person who does not have kids. Will that work? May not work. Right? So we have to take advice, yes, but we also need to practice discernment. We can't say कि हर चीज के लिए बस हम इनकी ही एडवाइस देते हैं. So हर इंसान का अपना एक स्पेशलिटी होती है, अपना एक एरिया ऑफ फोकस होता है, तो उससे रिलेटेड एडवाइस आप उससे ले सकते हैं. Right? So you don't need to just trust somebody again blindly, but before taking advice, you also see track record of that person in, like for example, if you're having financial issues. Now you can't take advice from a person who is himself or herself having financial problems. You can rather take advice from a person who has a track record of success, who has a track record of doing prosperity wise well in life. Same thing with relationships. If you need advice in relationships, you're getting stuck in particular relationship, you cannot take advice from a friend who is already having messed up relationships and living alone and has a couple of divorces already. तो वो इंसान तो आपको जो भी एडवाइस देगा वो और mess up एडवाइस ही देगा. तो मास्टर एक और बुक में लिखे हैं, इंस्पायर्ड एक्शन बुक में, you should check the track record of the person. Track record हमको चेक करना बहुत important है. And most of you are pranic healers. You can also scan the person. Right? Now, again, when we talk about faith towards our guru, faith towards grandmaster's teachings, that also cannot be blinded. But yes, I'm sure many of us who have joined us here, बहुत लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा कि नहीं, मास्टर की टीचिंग से मुझे फायदा हुआ है, मास्टर की टीचिंग हम जब भी अप्लाई किए, जब मेरी लाइफ बेटर हुई है. सो इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंटेड बाय यू योरसेल्फ. तो आप देखेंगे, हैव यू नॉट सीन कि आपका जो फेथ है मास्टर की टीचिंग्स में, वो अपने आप ग्रो होने लगता है, अपने आप बढ़ने लगता है, आपको उसको इम्प्लांट नहीं करना पड़ता. बट जब भी आपने टीचिंग्स को प्रैक्टिस किया, आपकी लाइफ बेटर हुई, अपने आप हमारा फेथ जो है, ट्रस्ट जो है मास्टर की टीचिंग्स में, वो स्ट्रेच होने लगता है, वो बढ़ने लगता है. यू डोंट हैव टू फोर्सफुली फीड इट इनटू योर सिस्टम. It will naturally happen. Same thing maybe with some of your instructors.
some of the people whom you take guidance with. एक मन में faith आ जाता है, और वो faith कब आता है? Because you've had experiences. That faith basically should not come because somebody said so. ठीक है, किसी ने बोला तो उसके recommendation पे आप एक बार try करिए, 2 बार try करिए, then you experiment with that person maybe once, twice, and if you get good results, then you will automatically start having faith and trust in that person. But you have to experiment before you conclude to yourself that you are having faith in this person. Is this clear? Yeah. So, Master says that trials develop your ability and your discernment. You become sharper, stronger, and more powerful. So, जब भी हम लोग के लाइफ में टेस्ट आती है, ट्रायल्स आती है, और उस ट्रायल्स को हम पास करते हैं, all these things are naturally making us stronger, making us more powerful, making us more mentally sharper. हम लोग शार्प हो जाते हैं. Have you not seen that? कि सपोज वो बोलते हैं ना कि दूध का जला पानी भी फूक फूक के पीता है, something like that. Because if you have burnt your fingers, so before taking any step, you will think. You will always think before you act. You will think before you act. But there have been times where you have acted without thinking, and then later on you realize, oh, I should not have acted like this. And don't you think that remains like a memory in us? अपने आप ही आप देखेंगे हम और ज्यादा mature हो जाते हैं, और ज्यादा हमारी discernment बढ़ जाती है, because then you're like, okay, let me be a little bit more careful, right? Even with people, have you not seen that with people also? बहुत सारे लोगों के साथ भी आप देखेंगे, suppose somebody has lied to you or somebody has cheated you, so next time अगर आप उसके साथ कुछ भी आपको interaction करना है, हम थोड़े से careful चलते हैं. सिर्फ नेक्स्ट टाइम ही हम केयरफुल नहीं चलते, नेचुरली आप देखेंगे हर इंसान के साथ हम थोड़े केयरफुल हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग ने ये लेसन सीखा है कि लोग हमको चीट कर सकते हैं. वी कैन नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट पीपल, सो ऑटोमेटिकली वी रिमेन अ लिटिल बिट मोर अलर्ट, वी रिमेन अ लिटिल बिट मोर अवेयर, so that people don't take us for a ride. So that is what Master is telling us. So don't feel bad about negative things that have happened in our life, especially things like लोगों ने हमको बुद्धू बनाया, लोगों ने हमको चीट किया. ये याद रखिए कि ये जब भी हो रहा है, next time ये अपने आप हम लोग को केयरफुल बना रहा है, अपने आप हम लोग को केयरफुल बना रहा है. Has that not happened with us? Yes. So I'm sure all of us might have many situations in life where you made a mistake and then later on you realize, oh, लोग ऐसे भी behave कर सकते हैं. Let me better be clear with my communication. Let me better be clear with my interaction. Let me better be very, very clear with any business deals that we do. Because हो सकता है पहले आपने पेपर्स साइन नहीं किए, लिखा पढ़ी नहीं की, कुछ चीज आप भूल गए, बट जैसे जैसे हम लोग एक्सपीरियंस गेन करते हैं, then we become sharper, we become stronger, we become more powerful, we become more clear with our communication. और ये सब चीज क्यों हो रही है? ये सब चीज इसीलिए हो रही है बिकॉज हम लोग ने बहुत सारे टेस्ट और ट्रायल्स पास किए, बहुत सारी टेस्ट और ट्रायल्स के थ्रू हम गुजरे हैं. So don't feel bad about trials, don't feel bad about challenges, because they are truly the ones that help our soul grow. हमारा soul वो टेस्ट और ट्रायल की वजह से ही ग्रो कर रहा है, उसी की वजह से ही आगे बढ़ रहा है. So you don't have to feel bad about that. Okay? Why should there be no conflict? There will usually be conflict. Our social background, experiences are not the same. Therefore, our perceptions are not the same. Differences in perception means differences in opinion. Differences in opinion leads to conflicts. Okay, so now this is also again an important message. Differences in opinion. What do you mean by differences in opinion? Now आप देखेंगे कि suppose एक group of people है. In a group of people, हर इंसान एक अलग बैकग्राउंड से है, हर इंसान की अपब्रिंगिंग अलग है. किसी के लिए जो चीज सही है वो किसी और के लिए वो चीज गलत भी हो सकती है, right? Like for example, let's just talk about a certain type of language. Suppose आपकी अपब्रिंगिंग कोई ऐसी जगह पर हुई है जहां पर एक टोन ऑफ वॉइस इज कंसिडर्ड टू बी impolite.
Okay, whereas some other place in our country itself, suppose you go to some other city, वहां पर if you talk very softly तो लोग समझेंगे कि आप तो बेवकूफ हो. Have you seen that? I've often seen this big shift, especially between because I used to live in Mumbai before, and then I got married in Calcutta. वहीं पर in these two cities itself, I've seen that the background, the upbringing, the lifestyle is very very different, very very different. Okay, like for example, in Calcutta, अगर Calcutta में आप कोई भी चीज बहुत आराम से कर रहे हैं, आप डिले कर रहे हैं, people are okay अगर आप हड़बड़ा नहीं रहे हैं. और अगर आप हड़बड़ाते हैं, people don't take it well. People think अरे आप इतना क्यों हड़बड़ा रहे हैं? Relax. But it's totally the reverse in Mumbai. If you're too relaxed, तो वहां पे लोग बोले अरे why are you so relaxed? Wake up, move. Right? तो जहां पर जो चीज गलत है वो कोई दूसरी सिटी में सही है, और दूसरी सिटी में जो गलत है वो इस सिटी में सही है. So we might often see this. तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कौन सही है और कौन गलत. It's just a difference of opinion. It's just a lifestyle change. It's just the upbringing of in a particular culture. It is just an upbringing of a particular society, a community, or a city, or a culture. Yes, like person's behavior. कुछ behaviors कुछ cultures में सही माने जाते हैं, कुछ behaviors कुछ cultures में गलत माने जाते हैं. Like certain things which I have seen, again coming back to, because these are two cultures I've seen closely. Like in Mumbai when I used to study, मैं hostel में रहती थी, तो वहां पर अगर मैं किसी को if I address somebody, मैं आप करके बात कर लूँ, with my friends, if I say, if I use the term, मैं अगर respect के साथ उनको आप से बात करूँ, या अगर मैं तुम से भी बात कर दूँ, they will think that what's wrong with you, hey why you being so formal, chill. तो हम लोग वहां पे अक्सर friends में तू से बात करते हैं. So this is the Mumbai culture, okay? But whereas in Calcutta, अगर आप तू से किसी के साथ बात करेंगे, they will think, oh, this person is so rude, so impolite, what a foul language. So here it is normal. Like I've seen here, even in couples, like my parents, when I see them, they will talk to each other in a tum language. Whereas my in-laws, if I see them, वो husband wife भी एक दूसरे को आप से बात करते हैं. So sometimes you feel, oh, why is this so formal? Whereas they see, oh, why these people are so impolite. Right? But आप देखेंगे कि it is not about being impolite or being formal. It is just a culture. It is just a behavior. It is just our upbringing, our society, our cultures. वैसे ही हमारे across बहुत जगह पर आप देखेंगे कि कोई चीज जहाँ पे गलत है, वही चीज कहीं और पर सही है. Yes. So that is why कभी-कभी इससे related लोग conflicts create करते हैं. So जब भी कहीं पर कुछ झगड़ा हो रहा है, कुछ झमेला हो रहा है, कोई conflict हो रहा है, तो वहां पर we have to understand that maybe certain conflicts are happening because simply not because there is a problem between two people. It is simply इसीलिए हो रहा है क्योंकि दो लोगों के experiences, उनके opinions are completely opposite. Because their upbringing is opposite, because their experiences are opposite in life. So differences of opinion can lead to conflicts, but we are not supposed to take it personally. तो कभी भी नेक्स्ट टाइम अगर आपके आसपास में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें आप लोग साथ में कोई काम कर रहे हो, और वहां पर if people are having within each other there are certain conflicts, then you should just pause and think that is this really a conflict, or is this just a difference of opinion due to different upbringing? Just give it a benefit of doubt. It is possible, absolutely possible, कि उनके upbringing में ही difference है, उनके culture में ही difference है, and it is not really to be taken personally. Not taking personally, क्योंकि हम लोगों को लगता है अरे this person is behaving like that, this person is always like that. Maybe that is how is normal for that person. उसके लिए वो normal है, इसलिए उसकी जो ideas हैं, उसके जो views हैं, वो सब चीज उसके हिसाब से वही सही है. It is just a difference in culture. Especially in our country, we have so many diversified cultures, diversified ways of living. बहुत diversification है
Yes, so it may be offensive to the other person if we do not agree with them. Yeah, बहुत जगह पर ऐसा होता है कि अगर आप कोई कुछ आइडिया दे रहा है and then if you obstruct, they take it, they think as if it is impolite. So we have to mold ourselves, understand our cultures, and kind of become little flexible, especially जब हम कुछ नए तरीके के लोगों के साथ या नए बैकग्राउंड के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं. Okay? Differences in opinions are sometimes productive and progressive. They help to clarify issues which result in a more balanced decision. So, in fact, अगर difference of opinion है कोई family में, it basically reflects कि उस family में या उस organization में या उस group of people में या उस business में अगर difference of opinion है, तो according to master, it is a healthy sign. क्योंकि then you are having a blend of energies, a mix of energies of different types of rays, different types of people, which is good for us, which is healthy for us. Okay? Extreme or fanatical decisions must be avoided. Where there are no differences in opinion, there is greater tendency for failure. तो जहां पर कोई difference of opinion है ही नहीं, यानी कि कोई एक इंसान पूरी तरह से सब चीज dominate कर रहा है, कोई difference of opinion है ही नहीं, सब एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह का काम कर रहे हैं, तो that actually can be a bigger disaster. वहां पे ज्यादा failures हो सकते हैं क्योंकि everybody is of the same ray और everybody is of the same category of people. तो कुछ एनर्जी उसमें ब्लेंड नहीं हो रही है, कुछ एनर्जी मिक्स नहीं हो रही है, इट्स जस्ट वन टाइप ऑफ पीपल टुगेदर. ओके, नाउ अ वर्ड इज लाइक अ फिंगर पॉइंटिंग एट डिफरेंट थिंग्स. डू नॉट लुक एट द फिंगर, फोकस ऑन द एसेंस ऑफ द फिंगर, फोकस ऑन व्हाट द फिंगर इज पॉइंटिंग टू. ओके, सो नाउ वही मास्टर बार बार यही बोलते हैं कि डोंट लुक एट द फिंगर, ये फिंगर कहाँ पे पॉइंट कर रही है, we have to pay attention there. Sometimes we get stuck with small things. कभी कभी हम लोग कुछ माइक्रो चीजों में अटक जाते हैं, you know, we get stuck with small things because we are becoming rigid with the form. Do not look at the finger, look at where the finger is pointing at. Basically also means do not look at the packaging, do not look at the form, look at the essence. Essence को समझिए. The essence, हम लोग को कहाँ पर अपनी एनर्जी ट्यून इन करनी है, towards the essence, not to the form or the packaging. Okay, so जैसे 10 शब्दों का मीनिंग एक ही हो सकता है, but if we pay more attention to the words, then we are focusing on the words, on the form. We are not focusing on the essence. Same with spiritual teachings. बहुत सारी spiritual teachings वो अलग अलग तरीके से पैकेज की गई है, but it is talking about the same essence. Do you understand the meaning between form and essence? Form and essence? Yeah, just put in the comment box if you understand the meaning between form and essence, or else we can just elaborate that a bit more. Form and essence. Form, body, yes. Essence is the soul, yes. So basically, form is what you see with your two eyes. It is the physical part. Essence is the energy, the purpose, जो हमको दिखाई नहीं देता. Like body, we can see. This is the form. Essence is the soul. Similarly, when a person is talking, जो शब्द वो इस्तेमाल कर रहा है, that is the form. The essence is what you feel. इससे बहुत बार होता है कि नहीं, ये तो बहुत प्यार से बात कर रहा है, लेकिन एनर्जी मुझे नेगेटिव आ रही है, because the essence is negative. The form is okay. अगर हम लोग सिर्फ फॉर्म पे ध्यान लगाते हैं, then we can get really fooled. सिर्फ हम लोग फॉर्म पे ध्यान लगाएंगे, पैकेजिंग पे ध्यान लगाएंगे, फिजिकल स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान लगाएंगे, we can really get fooled. हम लोग को क्या चीज पर ट्यून इन करना है अपने आप को? इसेंस पर ट्यून इन करना है. And that is what our school talks about. That is what Pranic Healing School talks about. We have to trust and tune in to the essence more than the form. More than the form. क्योंकि form से हम बुद्धू बन सकते हैं. Form से हम बहुत बुद्धू बन सकते हैं. Yes, Ms. Khan, what you're talking about, दिखावा, is nothing but exactly the packaging.
कितने बार हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody is having a big car and is wearing very branded clothes, ये हो गया फॉर्म. अब वो फॉर्म देख के इफ यू कम टू अ कंक्लूजन, oh this person is very prosperous, it is possible कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, अंदर से सब खाली है. Right? So we cannot get fooled just by the outer layer. We need to tune in and understand the essence, the inside of a person. Priyanka, your question, sometimes this leads to overthinking. Yes, and it also leads to a lot of contamination. क्योंकि अगर हम लोग किसी इंसान के सेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, it can lead to overthinking. More than that, it can lead to a lot of contamination. That's why don't do it for every person. But yes, if you're entering into business with someone, then you try to understand their sense. अगर आप किसी को पैसा लोन पे दे रहे हैं, try to understand the essence of that person. अगर आप किसी के साथ कुछ इंटरेक्शन कर रहे हो, you're planning to get married to someone, or you are आप कोई एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, then it is our responsibility, तब आप ये चीज इस्तेमाल करिए. But don't just sit, अगर हम लोग बैठे बैठे बस ट्यून इन करेंगे इसका ऐसा इसका, then it turns, the same thing turns into judgment, into overthinking, and will actually make you go mad. वो आपके दिमाग को पूरा कंटामिनेट कर देगा बहुत ज्यादा. So in certain areas, don't look at the finger. Master says look where finger is pointing at. But if it is none of your business, then don't even look at the finger. अगर वो आपका बिजनेस ही नहीं है, आपको कोई मतलब ही नहीं है उस इंसान के, तो फिंगर को भी देखने की जरूरत नहीं है. Not needed. हाँ, if we can stop that, then you will be able to save your time. You will not get into overthinking. Right? Don't even look at the finger. If it is none of your business, none of your business. वो जैसा है, don't even waste your karma, don't waste your time, don't waste your energy. But yes, if you are getting into some kind of a transaction with that person, some kind of a relationship with that person, then it is our responsibility to get into more facts. If they are your children, they are your family members, they are your employees, they are the people who are working with you, then it becomes your responsibility to tune in. By the way, for all the people who have been doing Twin Hearts meditation regularly, whether you like it or not, your sensitivity is getting enhanced every day. And you are already becoming very, very sensitive. And you're already having the capacity to understand the energies. कितने लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा है, या कितने लोगों को लगता है कि हमने कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया. So, would you like to know how to practice that? How to practice this more? Would you like to have some practical tip for it? How can you practice this? I'm just sharing what I normally do, and also Neeraj does. Like Neeraj and I, we both do this normally a lot. Suppose you started your day, or throughout the day, suddenly you're feeling sad. Suppose suddenly आपको अजीब सी एक sadness feel हो रही है, अजीब सी loneliness feel हो रही है. Okay? तो आप क्या करोगे? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को लगता है कि हम सैड फील कर रहे हैं, हम लोनली फील कर रहे हैं. सो व्हाट वी नॉर्मली डू इज, सडनली एनी नेगेटिव इमोशन दैट कम्स इन, कोई भी नेगेटिव इमोशन जब आता है, वी नॉर्मली जस्ट प्रैक्टिस डिसर्नमेंट. वी थिंक, ओके, इज देयर एनी रीजन फॉर मी टू फील सैड? इज देयर एनी रीजन फॉर मी टू फील लोनली? हैज एनीथिंग चेंज्ड? डिड एनीबडी से एनीथिंग टू मी? डिड एनीबडी डू एनीथिंग टू मी? What triggered this loneliness? और अगर ये सारे questions का आंसर आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, then what is the conclusion that you come to? कि वो sadness, वो loneliness आपका है ही नहीं. आपने आपके फैमिली से, या आपके आसपास से, या आपके जो लोग आपके ऑरा से कनेक्टेड रहते हैं, किसी और का sadness या loneliness को आपने महसूस किया है. So first you question yourself. Is this yours? Did you have any experience to feel triggered? Did you have any experience to feel suddenly sad? Did you have any experience to feel suddenly lonely? And if you feel कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, then you come to step 2. फिर आप step 2 पर आइए. Step 2 क्या है? Step 2 ये है, then you just relax and you say, okay, I'm not this sadness, I'm not this loneliness. Who is feeling like this in my surrounding? Who is it feeling like this in my surrounding?
Think about this not with anger but with compassion. Think about it with compassion कि अच्छा मेरे आसपास में कौन ऐसा महसूस कर रहा है. You will be amazed कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा. आपको तुरंत पता चल जाएगा. आपको किसी न किसी का चेहरा फेस फ्लैश करेगा, या हो सकता है कोई आकर के आपसे बात करेगा, कोई आपको मैसेज करेगा कि यू नो व्हाट, आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प मी आउट. And you will be shown who is feeling like that, because whoever is feeling like this is thinking about you and seeking for help from you, or maybe is connected to your aura. और आप जैसे जैसे इस टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे कि who is feeling like this, my higher soul, universe, God, please show me so that I can help that person. 99.9% of the times you will be able to pick it up. Excuse me. Okay, so 99.9% of the times we have seen we will be able to pick it up, especially if you're doing your practices regularly, and if you know that this thought is not mine, this feeling is not mine. Okay, I will just share. बहुत बार ऐसा होता है, इनफैक्ट हम लोग के सेंटर में सब लोग मेरे पर बहुत हंसते हैं इस चीज पर, स्पेशली पीपल, द हीलर्स एंड एडमिन टीम हु वर्क विद मी, बिकॉज आफ्टर अ व्हाइल देन आई जस्ट आस्क देम, I just text them, are you okay? Are you feeling like this? And they say, yeah, I am feeling like this. How did you pick it up? और ऐसा नहीं है कि you're doing any hi-fi techniques for that. It's just to enhance meditation. It's just to enhance meditation, and it's just being objective, compassionately objective. Compassionately objective. You have a feeling, you analyze. Is this mine? Is there any reason for me to feel like this? आपको खुद का भी ट्रू नेचर पता होना चाहिए. आपका खुद का आपको स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस पता होना चाहिए कि, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फील कि इट इज नॉट योर्स. देन यू ट्यून इन, ओके, whose can it be? So Jyoti, your question is, it happens to me but I'm unable to know who the person is. You will be able to know who the person is only if you practice compassion. If you feel अरे कौन ऐसा फील कर रहा है, or you get hassled about it, or you get irritable about it, your solar plexus will get activated. और solar plexus जब एक्टिवेट होगा तो आप नहीं पकड़ पाओगे कि कौन ऐसा फील कर रहा है, क्योंकि हमारी सेंसिटिविटी फिर ड्रॉप कर गई. Do you get this? Okay, just take a question. How can we protect ourselves from negative emotions next time? So the thing is, there are two things that are happening in the world of spirituality. There are two things that are happening. एक, कि कोई इंसान नेगेटिवली आपके ही बारे में ऐसा नहीं सोच रहा है. मे बी इट इज योर ड्यूटी टू हेल्प दैट पर्सन. इट कुड बी बोथ वेज. एक है कि लोग आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, आसपास में एनवायरमेंट नेगेटिव है और आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो आप अपने आप का शील्ड बना लीजिए. इफ यू आर एन अरहत, क्योंकि साइकोथेरेपी क्लास अगर आपने की है तो आप शील्ड बना लीजिए. बट let me take a step deeper, because we are studying this book, because we are meditating on the word compassionate objectivity, because we're talking about soul consciousness, we're talking about oneness. Maybe that emotion is come to you for you to feel so that you can help that person. कितने बार आप ये भी कर सकते हैं कि anybody who is feeling like this, जिसका इमोशन मुझे फील हो रहा है, may you be blessed with happiness, may you be blessed with joy. Feel compassion. Many times I've done that also. I don't even get to know कि वो कौन था, कौन ऐसा feel किया. But somebody feeling like that, I just form an intention कि whoever is feeling like that, maybe they're thinking about me, or maybe they want some help, and maybe the universe is showing me, let me do my duty, let me do my job. बस 2 मिनट आप निकालिए और उस इंसान को bless कर दीजिए. हो सकता है आपको पता भी नहीं है कि वो कौन इंसान है, आपको पता करने की जरूरत भी नहीं है. All you can do is just bless with opposite positive energy. Credits to Master Hector. I learned this from him. Just a second. Yeah. So credits to Master Hector. Once when Master Hector used to live in India, so we used to luckily get to spend a lot of time with him in the ashram. So there used to be times when in the breaks, तब स्टूडेंट्स बहुत कम हुआ करते थे हम लोग के आश्रम में. जब इंटेंसिव इवेंट्स होते थे तब बहुत स्टूडेंट्स कम होते थे. There would be like 15 people, 20 people. So luckily we would get a lot of personal interaction time and we could observe them clearly. So one thing I would observe about him is
Anytime he's just sitting, relaxing, in the middle he will bless someone and then cut his cord. Suddenly he will say, okay, I'm coming in 5 minutes. He will go away, maybe bless someone, do something, and then come back. So we happen to ask him and try to understand Master. So then that is the time he made us enlighten about this, that sometimes we feel emotions of other people rather than we getting, कभी कभी हम लोग भी उस इमोशन के क्लाउड में ओवरवेलम हो जाते हैं. कोई सैड है तो हम भी सैड हो गए, तो उनकी सैडनेस हमको टेक ओवर करती. But if we bless them with happiness, whoever that person is, you just say, whoever is feeling this sadness, may you be blessed with happiness. May your pain be healed. Actively you bless and then you cut. And you will be amazed कि वो इमोशन आपके अंदर से निकल भी जाएगा, वो आपको बॉदर भी नहीं करेगा, और आपने किसी की मदद भी कर दी. You practiced compassionate objectivity towards that person. बहुत बार ऐसे होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन था. But it is an act of service. It is an act of service. Okay, so also, there is this story about Annie Besant or Alice Bailey, one of them. I'm sorry, I don't remember who. What she would do is, वो न्यूज़पेपर जब मॉर्निंग में पढ़ती थी तो उसके अंदर जितने भी नाम हैं जिनके लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, हम लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आजकल तो नहीं पढ़ते, बट whenever we see news or we see troubled people, we feel that trouble within us, right? So what she would do is, Annie Besant, right? Thank you, Kanchan. So Annie Besant, when she would read, so whenever she would see people who are struggling, who are having trouble, every morning she would bless those people with healing energies, with soothing energies. It is very, very powerful. But my request to all of you, try this out and you will be so amazed to see कि आपके family में आपके relationships कितने अच्छे हो जाएंगे. I want you all to experiment this today in your family and give me a feedback tomorrow or in the night or anytime on the WhatsApp group. आप इसे try करके देखिए. कोई भी emotion जो आपको feel हो रहा है, या हो सकता है, बस most of the times with people like us, it will be from the family, क्योंकि हमारी aura उनसे कनेक्टेड है. तो फैमिली में क्या होता है, क्योंकि हम लोग सब एक घर में रह रहे हैं, तो लॉट ऑफ कनेक्शंस आर हैपनिंग, लॉट ऑफ ऑब्वियसली योर कॉर्ड्स आर कनेक्टेड टू द फैमिली मेंबर्स. सो if you are practicing compassion and objectivity towards your family members, जो भी नेगेटिव इमोशन आपको फील हो रहा है, आपको खुद को कितना बार तो पता ही होता है कि ये किसका है. जैसे ही आपको फील होता है, you transmute that energy. What happens in the world of energy is, say for example, let me just explain you what happens in the world of energy. Say for example, this is a thought form of sadness. Okay, just for experiment's sake. Okay, this is a thought form of sadness. Okay, so ये thought form घर में घूम रहा है. कोई इंसान sad है तो ये thought form घर में घूम रहा है. जिस भी रूम में वो इंसान जा रहा है, उधर इस तरह के 3-4 thought forms छोड़ दे रहा है. फिर आप उस रूम में जा रहे हैं तो आपने क्या किया, इस थॉट फॉर्म को पकड़ लिया. नाउ आपने जब इस थॉट फॉर्म को पकड़ा एंड देन यू आल्सो स्टार्ट फीलिंग सैड, तो क्या हुआ, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, बट इफ यू प्रैक्टिस कंपैशनेट ऑब्जेक्टिविटी, ये थॉट फॉर्म आपने फील किया एंड देन यू एनालाइज, यू प्रैक्टिस एक्यूरेट परसेप्शन, यू एनालाइज, एम आई रियली फीलिंग सैड? Is this created by me? This is a thought form. Is this really me? Is there any reason for me to feel sad? No, I was happy. 5 मिनट पहले तो मैं इतना happy feel कर रही थी. Why am I suddenly feeling sad? Maybe it's not me. Then who is it? Then maybe it is somebody from my family. If you can find out who it is, very good. If not, doesn't matter. What you do with this? You bless. May this sadness be transmuted to happiness. Now, जैसे हम लोग bless करते हैं इसको to happiness, this thought form gets transmuted, gets turned into happiness, and it will go back to the person from where it came. क्योंकि इस thought form का cord उस इंसान से connected है जिसने इसको बनाया. Do you understand the science behind practicing this in your house? चलता फिरता सर्विस कर सकते हैं आप. You don't need to look for service opportunities outside. You should become like a transmuting agent in your house. So आपको sadness feel हुआ, oh somebody created it, let me bless this with happiness.
ये ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू हैप्पीनेस एंड इट विल गो एंड हिट द ऑरा ऑफ द पर्सन. इसमें आपको जरूरत ही नहीं है ये जानने की कि किसने इसको किसने इसको क्रिएट किया. अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है जानने की और अगर आप उसके बावजूद भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तब यूनिवर्स आपको अपने आप दिखा देगा कि हु क्रिएटेड दैट. लेकिन अगर आप में उतनी मैच्योरिटी नहीं है और आप क्रिटिसिज्म शुरू कर दोगे, तो यूनिवर्स आपको सिर्फ ये थॉट फॉर्म ही दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा कि किसके थ्रू आया. Sometimes we just want to know, अरे किसने क्रिएट किया, but we don't want to do anything about it. So why will the universe show you who has created this? If you are a transmuting agent, तब आपको सब चीज दिखाई जाएगी कि किसने क्रिएट किया. If you practice compassionate objectivity, if you practice compassion, you're objective about it, you're not going to internally criticize that person, you're not going to enhance this negativity, तब आपको सब चीज दिखाई दी जाएगी. But when you are practicing compassion and when you're objective about it, तो आपको जानने की इच्छा भी नहीं करेगी कि किसने क्रिएट किया. जिसने भी क्रिएट किया, let me transmute that energy. And when you reach that stage, you will automatically be shown. So it's a principle of paradox. जब आपको देखने का मन ही नहीं है कि किसने क्रिएट किया, तब आपको दिखाया जाता है. It's a principle of paradox because now you've become mature, spiritually matured. You're not getting into gossip or you're not getting into minds of people. You don't want to intrude and see कौन depressive feel कर रहा है, कौन ऐसा anger feel कर रहा है, कौन violent feel कर रहा है. You're no more interested in that. You're just interested that whoever it is, may you be at peace. That is practicing compassion without even wanting to know who it is or who she or he is. Because probably, even if you get to know, you're not going to help that person. You're just going to gossip about that person. तब आपको कुछ नहीं दिखाया जाएगा. All right, I will just vanilla. In current pandemic, we heard news about COVID affecting loved ones. Sometimes tend to create a negative thought because of fear. Then I realized we should bless them. But does by blessing positively afterwards, does that neutralize or transmute the negative thought created first? Yes, it does. It does. That is why we gather together for group blessing. हो सकता है वो थॉट बहुत ज्यादा है, तो हमारी ब्लेसिंग कम पड़ रही है, तो हमको ब्लेसिंग और थोड़ी ज्यादा करनी है, या ग्रुप में और 4-5 लोग इकट्ठा करके और ज्यादा करनी है. लाइक आपके फैमिली का एनवायरनमेंट और ज्यादा सैड हो रहा है, और ज्यादा लोनली हो रहा है, ब्लेस करने के बावजूद भी, देन व्हाट कैन यू डू? देन यू ट्रांसम्यूट द होल एनर्जी ऑफ द हाउस. हाउ कैन यू डू दैट? How can you do that? Would you like to have another practical tip? Another practical tip? Please don't spread it everywhere, but you can try it. I have personally tried it and it has worked wonders for me. It just changes like a magic wand. आपके घर की energy बदल जाती है. What you can do is, when you do twin hearts meditation, instead of imagining the earth, imagine your house. Imagine all the family members. Okay? But don't just imagine 1 or 2 people. It will be too intense energy. बहुत ज़्यादा intense हो जाती है energy. लेकिन अगर घर में कुछ चैलेंज हो गया हो, या घर में लग रहा है कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हो, या एक जनरली एनर्जी बहुत सैड चल रही हो घर में, या एंगर चल रहा हो, या इरिटेशन चल रहा हो, देन यू जस्ट इमेजिन द हाउस एंड देन यू ब्लेस विद ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन, और जस्ट ब्लेस विद द प्रेयर ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी. Imagine your house, imagine all the family members, and then you bless. And then you say, Lord, make me an instrument of peace. Make me an instrument of love. You just use the prayer. वो prayer से आप आपके घर को with all the family members inside the house ऐसे visualize करके आप bless कर सकते हैं. And it works wonders. It really works wonders. और उस prayer का beauty देखिए. उसमें मास्टर क्या, उसमें सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी क्या बोले हैं? Lord God, thank you for making me an instrument. By the way, instrument हम ही को बनना है. Don't forget that. हम लोग खुद ही इन्वोक कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस. तो आपको ही वो सुपरमैन बनना है अपने घर का. वेट नहीं करना है कि कोई सुपरमैन आएगा और पीस फैलाएगा. You have to be that ingredient of bringing light in your house, and that is the true meaning of one pranicular pearl family. We have to become that instrument of peace. We have to become that channel of peace. And it's a very silent job, a quiet job, and it is truly practicing compassionate objectivity in our family.
और एक और चीज आपको मैं सबको बता दूं, जो लोग ने क्लासेस की है, स्पेशली जो लोग ने आध्यात्मिक योगा किया है, साइकोथेरेपी की है, हैव यू नॉट सीन कि फैमिली के ट्रबल्स आपको ज्यादा दिखने लगते हैं? वो ट्रबल्स हमेशा से थे लेकिन दिखने लगते हैं। आधे लोग तो वहीं पर नॉकआउट हो जाते हैं, ये सोचते हैं अरे प्राणी हीलिंग करके साइकोथेरेपी करके प्रॉब्लम्स बढ़ गई, मेरे से तो हैंडल नहीं हो रहा है। वो प्रॉब्लम्स बढ़ी नहीं, वो प्रॉब्लम्स थी, आपको दिखाई दी गई क्योंकि आपने ही प्रे किया भगवान को मुझे पीस का चैनल बनाइए। तो अगर आपको पीस का चैनल बनना है तो आपके सामने क्या आएगा? ऑब्वियसली एंगर आएगा, इरिटेशन आएगा, फिर आपकी टेस्टिंग होगी कि आप चैनल बने कि नहीं पीस के। तो दैट इज अ टाइम वी नीड टू प्रैक्टिस ट्विन हार्ट्स इन एक्शन, कंपैशन इन एक्शन, एंड इट इज अ वेरी अमेजिंग जॉब। ये काम करने में बहुत मजा आता है क्योंकि इसमें आपका हार्ट ही नहीं लेकिन आपका क्राउन चक्र भी बहुत खुलेगा और आपको हंसी आएगी, आपको इतना मजा आएगा कि एक बार ब्लेस किया, प्रॉपरली ब्लेस किया, एंड देन यू स्टार्ट सीइंग द होल वाइब्रेशन चेंजेस and you feel that wow, without even waving of hands, without even that person not being receptive, you could still do some magic, but do it quietly. जब उसका मूड ठीक हो जाता है ये मत बोलिए पता है मैंने तुमको आज ब्लेस किया था ट्विन हार्ट्स में, gone. It has to be done silently, quietly, and for me at least I feel that is the meaning of one pranic healer per family. In our presence there has to be peace. हमको अपने आप को भी ऐसे ही टेस्ट करना चाहिए कि हम जिस घर में रह रहे हैं हमारे अराउंड में पीस है कि नहीं। अगर नहीं है then we don't need to go outside for service. Is our aura strong enough to radiate peace at least in that 2000 square feet area? अगर उसी में हम फैला नहीं पा रहे हैं तो हम बाहर कैसे फैलाएंगे? So try to do this job as a homework. Any negative energy that you feel in your house, because most of us are in lockdown और काफी दिन और लॉकडाउन चलने वाला है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स करिए घर में, आपको बहुत मजा आएगा। And then you will feel so good that yes, this can you will feel that wow, we don't need to go anywhere. There is so much of job to be done in the house itself or maybe your office. So Varsha, your question, can we do this for 2 houses? Yeah, why not? 2 houses, 4 houses, 5 houses, depends on how much would you like to transmute. कितनी एनर्जीज को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं और क्या आप उसे एंजॉय करते हैं? क्या आपको कंपैशन फील होता है या आप को स्ट्रेस फील हो जाता है किसी और का स्ट्रेस देख के? अगर कोई इंसान स्ट्रेस्ड है, उसका स्ट्रेस देख करके आपको स्ट्रेस फील होता है, तो देन हु इज मोर पावरफुल? इज योर पीस मोर पावरफुल और दैट पर्सन स्ट्रेस मोर पावरफुल? then it is not, then we are not being a true pranic healing practitioner. अगर उसका अगर स्ट्रेस है, आपके प्रेजेंस में उसका स्ट्रेस गायब हो जाना चाहिए। Okay. Okay, so there's a question, do we need to bless our home throughout the meditation or at the end? So Rekha Jain, so what you do is, suppose there is a big problem happening in your house, अगर आपके घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में है वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कर सकते हैं, otherwise it is recommended that you do it at the end. At the end you do it, but in case there is crisis, I repeat, in case there is crisis or crazy problem, तो आप मेडिटेशन करिए और अर्थ को भी अगर आप इमेजिन करेंगे, even if you imagine earth, meditate in your house and just form an intention that you bring down the energy for your entire house. That also you can do. All right. When we bless a certain project to happen every day for months, but yet yield result don't come, heart shrinks. How do we keep ourselves motivated? Well, if by staying detached, if a project accomplishment makes you, if that doesn't get accomplished and you feel sad, and or if that makes you happy, then we are becoming too attached. If you're too attached, it's a problem. By the way, this will be spoken about in the next virtue. Next virtue हम लोग बात करेंगे इसके बारे में. Lying distorts the mental perception, the inner perception of other people. The karmic fruit of that is one's mental perception will be distorted. Why? Because one has mentally blinded and distorted the perception of others. Every time a person distorts the inner perception of someone else, his inner perception will be distorted.
मतलब अगर हम लोग अंदर से किसी का परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, अंदर से किसी को ब्लाइंड कर रहे हैं, तो हमारा खुद का भी परसेप्शन विल बिकम ब्लाइंडेड. दैट्स द लॉ ऑफ कर्मा. Lie used as excuses must be avoided. Practice a mature type of honesty. You know, कभी कभी हमारा काम नहीं खत्म हुआ तो हम लोग झूठ का सहारा ले लेते हैं कुछ एक्सक्यूज देने के लिए. So that's a lie. Eventually, everything based on lies will be destroyed. As much as possible, avoid unnecessary lies. By the way, this statement is again very, very powerful. Eventually, everything based on lies will be destroyed. Please fix this in your mind very, very well. याद रखिए, कोई भी चीज जिसका फाउंडेशन ही झूठ है, it will be destroyed. If you have earned something out of a lie, that money will go away. If you have built a relationship out of a lie, that relationship will go away. If you have built a particular reputation, आपने अगर आपकी खुद की रेपुटेशन एक झूठ के बेसिस पे बनाई है जो आप खुद नहीं है, but you have created a false image about yourself, it will be destroyed. So there are बहुत लोगों का रातों रात बहुत चीज डिस्ट्रॉय हो जाता है. So anything जिसका फाउंडेशन is a lie, with time it will be destroyed. It will be destructive. वो बंद होगा ही होगा. Okay? Because of fear to tell the truth, to lose someone. Fear. Sorry, I didn't understand that. Yeah. So remember कि कोई भी चीज का बेसिस झूठ नहीं होना चाहिए. अगर कोई भी रिलेशनशिप झूठ के बेसिस पर है, then that will come to an end very soon. वो ज्यादा लंबा टिकता नहीं, वो रिलेशनशिप भी लंबी टिकती नहीं. Unnecessary lies is basically as much as possible avoid all unnecessary lies. What do you mean by unnecessary lies? 5 मिनट वाला झूठ, 2 मिनट वाला झूठ, हम 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंचने वाले हैं आप आधे घंटे में. यू नो, या ऑफिस से छुट्टी चाहिए तो कुछ झूठ बोल दिया कि मेरे घर में किसी को कोविड हो गया है, या मुझे बुखार हो गया है, या डेथ हो गई है. सो यू नो दैट टाइप ऑफ लाइज in the form, all these are unnecessary lies which can be completely avoided. Sometimes we lie to our family because we want to hide something. तो एक या तो ऐसा काम ही मत करिए जिसको छुपाना पड़ता है. So if you maintain this discipline within you that you will not lie, it will also protect you from incurring a negative act. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको झूठ बोलने की आदत है तो आप गलत काम इजीली कर लोगे, यही सोच रहे कोई बात नहीं हम छुपा देंगे. बट अगर आपको छुपाने की आदत नहीं, आई हैव सीन पीपल, यू नो, दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर इंफॉर्मेशंस, देयर थिंग्स, हर चीज सीक्रेट पे सीक्रेट पे सीक्रेट पे सीक्रेट. व्हाई डज योर लाइफ नीड टू बी सो सीक्रेटिव? आदमी सीक्रेट तभी रखता है, people make their life very secretive simply because there is probably a lot of lies there and you don't want anybody to see. So you put layer by layer by layer by layer. You don't want anybody to see. So jitna you keep things open and simple, your life will become simple. Yes, there is something called as necessary lies also. Necessary lies, like for example, if you know a bitter truth about someone, like suppose कोई business एक गलत तरीके से कर रहा है, so you don't need to be brutally honest where you go to the police and tell you know what, yes ऐसा काम करा आप इसको पकड़िए. So that can be, you know, those are necessary lies. आपके घर में चोर घुस गया है, बोल रहा है बताइए आपका चाबी किधर है लॉकर का, आप थोड़ा बोलेंगे वहां पर है, राइट ड्रॉ, हम ऑनेस्टी प्रैक्टिस करेंगे. Obviously you have to lie, it's a necessity, you have to lie at that time. So sometimes lies, इसीलिए loving kindness comes before honesty. कभी कभी we cannot be we cannot be completely brutally honest. But master says one thing, not in this golden lotus sutra, in another golden lotus sutra, where he says that be brutally honest to yourself. खुद के साथ brutally honest, दूसरों के साथ don't be brutally honest. Like imagine you have gone for somebody's party,
अब आप कोई पार्टी में गए हैं, जो होस्ट है एक लेडी है, वो शी इज ड्रेस्ड अप, शी इज रियली पुट एन एफर्ट, और वो बहुत मेहनत करके बहुत चीज की है, वो आके आपसे पूछती बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, एंड हाउ आर ऑल द अरेंजमेंट्स, एंड शी इज रियली पुट अ जेन्युइन एफर्ट, बट you really don't like the arrangements and you really don't like the outfit which she's wearing. So what will you practice here? Honesty or loving kindness? Honesty or loving kindness? Obviously you can't be very very honest. Oh, you know what, you look horrible, you know what you're wearing is just not suiting you, you know what, this whole decor is shabby. So you can't say that. So what will you say? You practice loving kindness, you say yes, it's nice, I'm enjoying. But उस समय भी आप झूठ बोलने से अपने आप को रोक सकते हैं. कैसे रोक सकते? कभी कभी क्या होता है, हम लोग मजाक मजाक में बोलते हैं हाँ हाँ ग्रेट, यू आर लुकिंग फैंटास्टिक, एवरीथिंग इज सो ग्रेट दिस, और मन ही मन हम हंस रहे हैं. सो डोंट मेक अ मॉकरी आउट ऑफ इट. आल्सो you can practice compassion, you can practice compassion, and you can say yes, I'm really enjoying, thank you very much for the lovely evening, because maybe you're genuinely enjoying. So यहाँ पे आप झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, but at the same time आप सच भी नहीं बोल रहे हैं. If you become very sharp and very brutally honest to every person, you will break many relationships. So कहीं कहीं पर हम उतना ही सच बोल सकते हैं जितना सामने वाला हैंडल कर सकता है. या बट इफ यू आर fearful to tell the truth, तो फिर आप ऐसा काम ही मत करिए जिसके लिए आपको डर लगे. You do things because you are courageous enough to do things. So you just speak the truth. Then you need to work on the courage aspect. If you're just lying because you can't be courageous enough. Okay? So we come to the page, come to end of page 33. Tomorrow we will start from page number 34. Okay? So let's close with an invocation. It's 5 o'clock. Let's close with a prayer. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to Master Choa Koksui, to Lord Mahaguruji Mailing, to the healing angels, healing ministers, to my higher soul, my divine self, to the angels of pranic healing and arhatic yoga, especially to the angels assigned to the book Compassionate Objectivity. We thank you for your blessings. Thank you for your presence. Thank you for bringing us all together. In full faith, we thank you. Gently open your eyes. Thank you very much. Atma Namaste. Do share your takeaway message for today in the WhatsApp group, and we will be continuing till Wednesday. Atma Namaste.